हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, आई एम ऑडिबल। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों ने बोला था लाइव लो, रिकॉर्डेड मत लो। मैं भी देखती हूँ आज कितने ज़्यादा लोग लाइव ज्वाइन करेंगे। क्विज रिकॉर्डेड यार, वो मजबूरी थी यार, नेट नहीं था। एक दिन आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट। अब छोड़ने से तो अच्छा है ना, मैं रिकॉर्डेड ही डाल दूँ उस चीज़ को, है ना। तो उसमें तकलीफ थी जिस किसी को भी। तो अब लाइव ही होगी वैसे रोज। अगर नेट नहीं हुआ तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है भाई, फोन ना इतना प्रोवाइड नहीं कर पाता स्ट्रॉन्ग की वाईफाई और लाइव स्ट्रीम दोनों को सपोर्ट कर पाए। लैपटॉप में थोड़ा हार्ड हो जाता है उसको सपोर्ट देना। चलें फिर शुरू करते हैं। What is not that important to maintain good health as other options are balanced diet, personal hygiene, regular exercise, proper disposal of kitchen waste. Proper disposal of kitchen waste. This is the right answer. एक सेकेंड दें आप मुझे, मैं टैब इधर उधर कर लूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए देखने में। कुछ कर जाके मुझे देखते नहीं। हम्म चलें जी। नेक्स्ट इज which of the following statements is false? When people are healthy, they are more efficient at work. सही बात है। Regular exercise is very important to maintain good health. सही बात है। Healthy means only absence of disease. गलत बात हो गई। Health increase longevity of people and reduce infant and maternal mortality. ये थर्ड गंदी बात। गोलू जी प्रेजेंटेड, जी जी, स्पेशली आपके लिए ही लाइव आया जा रहा है। आपने ही लाइव स्ट्रीम में कहा था बड़े ही जोश में कि भाई लाइव लो, तो लाइव ले रहे हैं फिर। व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ? माइंड इन्फ्लुएंसेस आर इम्यून सिस्टम बाय मीन्स ऑफ न्यूरल सिस्टम. Mind influences our immune system by the means of endocrine system which control health. Mind influences our immune system by means of neural and endocrine system which control health. Last one. Yes, सही है हमारा. Yoga does not contribute in which form of health? Physical, mental, physiological, both A and B. Yoga does not contribute. Physiological, yes. Good humor hypothesis of health was disproved by the discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method. Demonstration of normal blood temperature in people with black bile using the thermometer. Both A and B using vector-borne diseases. Okay, good humor hypothesis of health. पता नहीं, I don't have any idea about this. Both A and B. The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method. Demonstration of normal body temperature in people with black bile using thermometer. The person with black bile were considered to be belong to black pigmentation group, belong to hot personality, belong to hot personality having fevers, belong to black pigmentation will be prone to fever. Third is the right answer for this. Yes. Select the option where all column are correctly matched. Malignant tumor, plasmodium ovale, cerebral involvement, typhoid, salmonella typhi, confirmed by VDRL test, elephantiasis, Wucheria, Brancofti, waterborne disease, ringworm, microsporum, intense itching. Last one is the right answer for me. Yes, this is the right answer. The assertion by Hippocrates about health was same as that of Indian Ayurveda system, different from Indian Ayurveda system, supported by some other early Greeks, more than one option. Different from the Ayurveda system, supported by some other early Greeks. Yes, more than one option is correct. देख लेते हैं एक बारी. This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian ecosystem of medicine asserted.
The earlier concept of health was a state of body and mind where there was a balance of certain humors, a state of mind, body, and heart, more than one option. Body, mind, certain humor, or heart. Which of the following won't affect health? Genetic disorder and infection, mind and mental state with black bile, lifestyle or habit and some habits which we lack, rest and exercise won't affect our health. Mineral and mental state with black bile, lifestyle, genetic disorder and infection, lifestyle or our habit and some habit which we lack, rest and exercise. सेकंड मेंटल माइंड एंड मेंटल स्टेट विद ब्लैक बाइल, इससे हमारी हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी? कुछ समझ सा नहीं आया मुझे क्वेश्चन. ऑफ कोर्स इज हेल्थ अफेक्टेड बाय दिस ऑल दैट. अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड आंसर दे दिया है इन्होंने तो, कि ये पॉइंट्स दे नहीं रखे तो वही आंसर है. आगे बढ़ते हैं. What is necessary for achieving good health? Vaccination against genetic disorder, awareness about disease and control of vectors, vaccination awareness about disease and proper disposal of waste, control of vector and maintenance of hygiene, food and water resources only, self-care and awareness along with immunization. Second, vaccination awareness about disease and proper disposal of waste. Okay. Pathogen are not most of the parasites result in morphological and functional damage have to adapt to life within the environment of host. There are four type. नोट लगा रखा है ना. Are not most of the parasites. देखते हैं. Are not have to adapt life within the environment of host. Are not result in morphological. First, fourth. Are not pathogen are not, there are of four types. यार क्वेश्चन में गलती है. दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन आई फील. आर नॉट लगा रखा है और फिर दे रहे हैं कि फोर टाइप फंजाई बैक. फंजाई एक सेकंड देख ही लेते हैं. A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, helminth could cause disease in men. स्विच इन द क्वेश्चन है कुछ. नॉट नहीं लगाएगा तभी तो वो सही होगा. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन एनालॉगी. निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी. आगे बढ़ते हैं. व्हाट विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट टाइफाइड फीवर. सही है. Which of the following set represent disease communicated through contaminated food and water? Typhoid and tuberculosis, typhoid, chlorella, measles, rabies, tuberculosis, measles, typhoid and tuberculosis. Oh, typhoid and chlorella. ट्यूबरक्लोसिस भी तो होता है यार, आई गेस. तभी तो उसमें मना करते हैं कि खाना नहीं पीना नहीं इन्फेक्टेड पर्सन का. Intestinal perforation is the ultimate symptom of the extreme stage of which disorder? Malaria, filariasis, typhoid, pneumonia, pneumonia, malaria. ना मलेरिया ना निमोनिया, टाइफाइड. इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हाँ टाइफाइड में होता है ये. A cook carrier of a fish and spread the disease for many years by food she prepared. This information is associated with the classic case on medicine, that of typhoid Mary, nickname Mary Mellon. Mary Mellon, nickname typhoid Mary. मैरी मैलन स्पेलिंग ही अलग दे दिए भाई, इतना क्या वो. मैलन मैलन भाई मुझे नहीं पता कौन सा वाला मैलन है. यही वाला है. Typhoid is caused by a bacterium which infect only the small intestine by means of food and water that is contaminated. Caused by sporozoans तो नहीं होता. Caused by bacteria which infect small intestine by means of contamination, water and food and then migrate to other organ through blood. Yes, that is the right answer.
विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर? कौन सा वेक्टर से नहीं जाता? अल्फा वायरस, साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम विजेरिया, बैंक्रॉफ्टी। अल्फा वायरस, salmonella typhi will not use any vector. Salmonella typhi causes an acute infection of intestine that causes high fever and weakness, enlargement of spleen and pain in stomach, rose color rashes on the body. All of the above. All of the above. आगे बढ़ते हैं. By inhaling aerosol released by an infected person causes the spread of which disease? Certainly inhaling aerosols. Malaria, pneumonia, plague, filariasis. Pneumonia. Yes, pneumonia is the right answer. Out of the following disease which are caused due to bacterial infection? टाइफाइड है बैक्टीरिया वाला. फर्स्ट एसीडी, क्लोरेला ट्यूबरक्लोसिस. एसीडी. यार नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट एक कोई नया मेंबर, मैंने नाम पहले शायद नहीं पढ़ा, अजीब से ही. अजीब नहीं, मुझे दिख नहीं रहा. ए बी समोसा फैन पेज. अजीब ही नाम है, मतलब मैंने सही बोला था. कितना कितना अजीब नाम है यार. जो भी है, इन्होंने ज्वाइन किया है एंड ही इज ऑल्सो आंसरिंग. गोलू जी तो है ही. ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग निमोनिया आर करेक्ट एक्सेप्ट it is caused by Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza. निमोनिया के बारे में हर सारी करेक्ट है, बस एक करेक्ट नहीं है. निमोनिया बैक्टीरिया ग्रो better at 33 than at 37, hence they tend to cause the disease in upper respiratory tract than the lower respiratory tract. Bacteria infect alveoli of lungs. In pneumonia, fingernails turn bluish in color. थर्ड वन आई गेस. लाइक इट. ये टेम्परेचर का कोई लोचा नहीं है इसमें. Infection with Haemophilus influenza, especially in children, can cause. Infection with Haemophilus influenza, especially in children, can cause diphtheria, SARS, pneumonia, dysentery. निमोनिया. सार्स क्या होता है? सार्स तो नहीं पढ़ाया हमें शायद. सार्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे. निमोनिया इज द राइट आंसर. Infection of alveoli of lung by Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza lead to alveoli becoming fluid-filled and leads to severe problem in respiration. Is an example of a bacterial disease, a viral disease, a fungal disease, a Helminth disease. Streptococcus pneumonia. बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथ. हेलमिंथ नहीं है, फंगल नहीं है, वायरल भी नहीं है. आई विल गो विद एंड दिस इज द राइट आंसर. द कॉमन कोल्ड इज characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually lasts for 3 to 7 days. Infection may occur through contaminated food and water, hypodermic needles, droplet infection resulting from cough and sneezes bite of infected mosquito. ड्रॉपलेट भाई, जब तो मना करते हैं खुले में मत छीको. कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज अ वायरल डिसीज. है ऑप्शन? हाँ, है ऑप्शन थर्ड. Which of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described? Plasmodium falciparum, a protozoan pathogen causing the most serious type of malaria. Felis tigris, the Indian tiger, well protected in Gir forest. E. coli, full name Enter nahi. E. coli Serratia coli. Musca domestica, the common house lizard nahi. PYQ यार ऑलरेडी टिकड है. चलें आगे बढ़ते हैं. द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ विच टू इन्फेक्शियस डिसीजेस इज कॉमन.
मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी ठीक है, यानी बैक्टीरिया से हो रही है या जिस मर्जी से हो रही है, वो कॉमन होना चाहिए. Malaria, filariasis, pneumonia and the common cold, typhoid and ringworm, pneumonia and malaria. Malaria, filariasis, typhoid and ringworm, pneumonia and the common cold. Okay, we'll go with second, pneumonia and the common cold. Which of the following is not an intestinal parasite? कौन एक intestinal parasite नहीं है? Entapima histolytica, Ascaris, Salmonella typhi, Plasmodium. Plasmodium. Yes, Plasmodium is the right answer. The most infectious human ailment caused by a virus is AIDS. Common cold. Most infectious is common cold. Okay. Common cold differ from pneumonia in that pneumonia is communicable disease, whereas common cold is a nutritional deficiency disease. Pneumonia can be prevented by a live attenuated bacteria vaccine, whereas the common cold has no effective vaccine. Common cold is caused by a virus, while pneumonia is caused by a bacterium. नहीं, नहीं. Pneumonia pathogen infect alveoli, whereas common cold affect the nose and the respiratory passage, but not the lungs. Fourth one is the right answer. So PYQ, are already done है PYQA. AIPMT 2012. Okay, in malaria, the female Anopheles mosquito is host, vector, both, neither host nor vector. होस्ट भी होती है, वेक्टर भी होती है, दोनों दोनों होते हैं. In malaria infection, the rupture of RBC is associated with release of a toxic substance called hemozoin. ये क्या है? हिप्नोटॉक्सिन. हीमोजोइन आ गया सेकंड पे. Which of the following statements is incorrect with respect to malaria? Malaria is a disease caused by protozoan. Malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum. Parasite enter the mosquito body and multiply to form sporocytes that are stored in stomach of mosquito. Malaria parasite initially multiply within the liver cell in human. Incorrect बताना है. थर्ड वन मॉस्किटो के पेट में थोड़ी ना होता है. 35 हो गया है. 35 का सी थर्ड आंसर है. रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकरेंट मलेरियल सिम्टम? स्पोरोजॉइड, हीमोजॉइन, गैमीट इन ब्लड, हेमोग्लोबिन. रिकरेंट यानी दोबारा आना. हीमोजॉइन. गैम्बूसिया इज अ फिश. यस. इंट्रोड्यूस टू फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा. एक ही ऑप्शन में है. The sporozoid that cause infection when a female Anopheles mosquito bite a human being are found in hepatocyte of human, RBC of mosquito, RBC of man, salivary gland of infected mosquito. Fourth one is the right answer. Sexual reproduction of parasite Plasmodium occurs in Plasmodium का sexual reproduction कहाँ पर होता है? Mosquito gut. Yes. A person suffering from a disease caused by Plasmodium experiences chill and fever at the time when the sporozoids released from RBC are being rapidly killed and broken down inside spleen. The trophozoites reach maximum growth and give out certain toxin. The parasite, after its rapid multiplication inside RBC, rupture them, releasing the stage to enter fresh RBC. The micromatocytes and megagametocytes are being destroyed by the WBC. Rapidly killed and broken down inside spleen. Inside RBC, rupture them, releasing the stage to enter fresh RBC. I think third. Third is the right answer for 40.
In which part of the body or the host do the following events in the life cycle of Plasmodium take place? For this, match the item given in column 1 and column 1 with column 2. Okay, fertilization occurs in fourth, third, first option दे रखा है RBC of human being, third is stomach of mosquito vector, first is liver cell of human, liver cell of host human being. अभी देखते हैं इसको. बी है डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोसाइट, स्टमक ऑफ मॉस्किटो, रिलीज ऑफ स्पोरोसाइड, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई एम अ बिट कंफ्यूज इन दिस. Fertilization, stomach of mosquito vector, development of gametes, RBC of human being. ठीक है. Release of sporozoid, body cavity of mosquito, asexual reproduction, liver cell, RBC of host human being. जाते हैं थर्ड के साथ. Third is the right answer for this question. Select correct sequence about life cycle of Plasmodium. Sporozoid, RBC, liver cell, gametocyte in blood meal, female mosquito multiply, female mosquito sporozoid, female mosquito. Okay, gametocyte, sporozoid, liver cell then RBC ना. Hmm. सेकेंड वाले के साथ जाते हैं. करेक्ट सीक्वेंस. Yes, second is the right answer. Which of the following mismatch with respect to the following events which occur in the life cycle? Erythrocytic schizogony. The rupture of RBC is associated with the release of a toxin substance called hemozoin, which is responsible for the chill and high fever. मिसमैच बताना ना, पहला तो सही है. Gametocyte, sexual stage development intestine of mosquito. Fertilization take place inside stomach of mosquito. नहीं. Schizogony in liver cell. The parasite reproduces sexually in liver cell, bursting the cell and second one ही मुझे गलत लग रहा है. Sexual stages develop in intestine of mosquito. Which of the following statement is not correct regarding malarial infection? Plasmodium enter the human body as sporozoid through the bite of freshly molted female Anopheles mosquito. High fever recurring every 3 to 4 days. Not correct बताना है. Sporozoid initially multiply within the liver cell and then attack the RBC, resulting in their rupture. When a female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito body and undergo further development. Last ही है मेरे हिसाब से गलत. फर्स्ट गलत है. Plasmodium enter the human body as sporozoid through the bite of freshly molted female Anopheles mosquito. ओके, आगे बढ़ते हैं. 45 ऑलरेडी डन है. PYQ. Motile zygote of Plasmodium occur in gut of female Anopheles. Mark out the incorrect statement regarding infection of Entaviema histolytica. It is a type of monogenetic parasite. Stools characterized with excess mucus and blood clots. It is the parasite of small intestine of the human being. Housefly act as mechanical carrier of the cyst to contaminate the food and water. Third side of small intestine का नहीं होता है ये. Okay. If an infected person is bitten by a female Anopheles mosquito, what will it take up with its blood meal to become another infected mosquito for the spread of disease? Sporozoites, gametophyte of Plasmodium. A is merozyte infect human when mosquito bite. B is the parasite reproduce sexually in liver cells. C यहाँ पे symptoms of malaria. D is fertilization in a hemosoil of the mosquito. Fourth, third, symptom of malaria.
ये चिल्स वाला प्रोसीजर है। यार डायग्राम भी अच्छे से याद रखने पड़ेंगे आपको। टेकन अ ग्लांस, बड़ा कर लेते हैं तो यार दिखता नहीं है, टेढ़ा लैपटॉप होता है ना। Take a glance of a part of the life cycle of Plasmodium given below as events A, B, and C along with the description. Parasite reproduce asexually in the red blood cell, busting the red blood cell and causing cycle of fever. सही है ये तो। क्या बताना है? नीचे लिखा है क्या? हाँ। करेक्टली डिस्क्राइब, कितनी करेक्ट है इसमें से? सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोफाइट डेवलप इन इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। Fertilization development take place in intestine stomach of mosquito. ए और सी सही है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। तीन सही है मेरे हिसाब से। यस, थ्री इज द राइट आंसर। स्क्रीन डिसअपियर, यार क्या बदतमीजी होती है यार। आ तो रही है यार स्क्रीन। वेट फॉर अ सेकेंड। अब आ रही होगी, आई होप सो। विजिबल है स्क्रीन? अगर विजिबल है तो बताइए। हेलो हेलो, इज इट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन क्लोज आफ्टर क्वेश्चन नंबर 46। ओ भाई, इतनी पहले से? पीछे कर देते हैं फिर हम। रुकिए। अब आ गई है, नहीं आ गई है? एनी थम्स अप साइन अगर आ गई है तो। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 46, 46 हो गया। 46 का इनकरेक्ट आंसर है थर्ड वाला। इट इज अ पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आ गई है, पुष्पेंद्र जी का आ गया है। 47 पढ़ लीजिए। If an infected person is bitten by a female Anopheles mosquito, what will it take up with its blood meal to become another infected mosquito for the spread of disease? Gametocyte of Plasmodium, sporophyte of Plasmodium, sporozoid, hemozoin। मैंने थर्ड मार्क किया था, इसका आंसर फर्स्ट है, गेमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम। 48 पे आते हैं। 48 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या सही है, करेक्टली मैच बताना है, जिसका आंसर है सी, सिम्टम ऑफ मलेरिया। दिस इज द राइट आंसर फॉर 48। 49 पे बताना है इसमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ लेते हैं। पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in the red blood cell, bursting the red blood cell and causing cycle of fever. Sexual stages gametophyte develop in intestine of mosquito. Fertilization and development take place in intestine stomach of mosquito। सेकंड गलत है। ए सी सही है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। डी भी सही है। तो ओवरऑल थ्री स्टेटमेंट सही है। थर्ड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फॉर्म्ड इन मॉस्किटो। मॉस्किटो में कौन सी स्टेज आती है? स्पोरोजोइड, गैमीट्स, बोथ वन एंड टू, गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स। बोथ वन एंड टू, स्पोरोजोइड एंड गैमीट्स। फोर्थ नहीं है यार इसका आंसर। बोथ वन एंड टू, स्पोरोजोइट एंड गेमीट्स। सेशन होता है हमारे यहाँ पे एंड 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स फॉर जूइंग एंड डूइंग क्वेश्चंस। थैंक्स का यार तुम्हारा अपना भी फायदा ही है वैसे तो, बट स्टिल लाइव आई हूँ मैं आज। ठीक है, मैंने अपनी बात कंप्लीट रखी है। मेरा लाइव ना आने का रीज़न बस वही था कि मैं लाइव नहीं आ पा रही थी बिकॉज ऑफ द थिंग्स कि भाई वाईफाई नहीं है, और फ्राइडे को मैं खुद बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय। मेरे महबूब